मुख्यमंत्री स्टालिन से कहते निकट में गण विवाह उत्सव में जोगद तमिलनाडु मुख्यमंत्री स्टालिन नवदंपति मान 16टी संतान लाभ करने टीडीपी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पॉपुलेशन बढ़ाई तात्पर्य है डिलिमिटेशन 2026 पाखे आसूची जेते पाखे आसूची द सेंटर स्टेज इज डिलिमिटेशन ये डिलिमिटेशन विषय मुख्यमंत्री ताकर सरकार जहाँ आभिमुख्य प्रकाश करेंगे कारण सर मु कहूँ लोकसभा सीट्स आमर सब कमिज कही रखुची सर या द्वारा केते क्षति होगापाई जाऊँगी आमर आम राज्यर एवं द्वारा कौन क्षति हम ना आम 18टी सीट पाइबा जगार आम बर्तमान पाइबू कम सीट 21टी सीट जगार तेणुक the basis of delimitation is yet to be worked out, but there are speculations on the basis of certain indication such as the increase in the seats in the new parliament to 888 seats एवं सही भली भाव में जो कार्यक्रम होगापाई जाऊँगी ताकू आमको सामना करिया पाई पड़िबो एवं से सामनाटी कौन as the year 2026 approaches the issue of delimitation of parliamentary and assembly constituencies is getting public attention and controversy. This is the year when the freeze of the number of seats will end. The next round of delimitation must be undertaken following the first census conducted after 2026. Tenu, delimitation process set out in the constitution involves two aspects: revising the number of parliamentary seats in each state based on its population ratio to the national total after each decadal census, and the second, redrawing the territorial boundaries of parliamentary and legislative assembly constituencies to ensure they are relatively equal and comparable to terms of population. Sir, कौन हवा पाई जाऊँ आम ये बसीचु जानिनु आर इम्प्लिकेशन कौन हम ये कई जानी ना सर मुख्यमंत्री को निवेदन करी से उक्ति रखिए आधे लोकसभा सीट्स रिमेनिंग कांस्टेंट एट 543 scenario 1 and the seats are divided among states as per projected population in 2031. Odisha will lose 3 seats. Shares of seats in Odisha will reduce from 21 to 18. Scenario 2, Lok Sabha seats increase to 848 as per projected population. The seats are divided among states as per projected population. Share of seats of Odisha will increase. Thus, Odisha may gain 7 seats, but percentage and representation of Odisha in Lok Sabha will get reduced from 3.87 density to 3.30. मुझे इच्छा करी मुख्यमंत्री आम राज्यर से कार्यक्रम करेंगे कौन कारण आमर फर्टिलिटी रेट टोटाल फर्टिलिटी रेट आमर भारत वर्ष है 2 ओडिशार 1.8 तमिलनाडु तेलंगाना केरला आंध्र प्रदेश एमाने समस्त बिलो एवं 4टी राज्य बिहार उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश सेमानकर जो 2.4 एवं नेशनल एवरेज ऊपर अच्छा तेणु राज्य सरकार आभिमुख्य कौन मुख्यमंत्री हैज द बाउंडेड ड्यूटी टू टेल अस जे कथाटा किभली भाव में हम कारण नाउ द इश्यू हैज कम टू फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अनुसार हम एवं अमित शाह जो कथा कहते इट इज एम्बिगुअस स्टेटमेंट जो गोटा प्रोरेटा बेसिस रे कहते the statement remains ambiguous as it does not clarify whether the pro rata calculation is based on the current number of seats or the latest population figures. The Chief Minister ought to find out what is going to be done for this. एवं सही कथा कहला परे सर मु आसीबी आपन को पाखु जे जते बेले गोटा जजमेंट आसीची सर गोटा जजमेंट आसिला टू एंड state sanctioned caste discrimination in prisons. Extremely significant recent judgment by Supreme Court has exposed and discarded the state's encoding of caste into law governing India's prisons. The case is another confirmation that caste is an inescapable Indian reality manifesting in every realm of social life, even in prisons. आ ऊपर सरकार को कौन आभिमुख्य देइछथि कि इंस्ट्रक्शन होम डिपार्टमेंट रे करिछथि कि व्यवस्था मु ताकठर जानिया पई चाहूछि कारण
Importantly, the court has noted, with independent the adoption of the constitution, what ought to have followed was the rules of prison management of labor, food and treatment of prisoners would eschew caste